Any questions up to part D? So then we'll do part E now. Find pressure and liquid composition at 327 Kelvin and Y1 equal to 0.4. Okay, so what does this translate to? See, when we look at, say, T, find T and Y1 given X1, what are you finding? I mean, can you give a name for this? I think I've told you before, but I'm just cross checking whether you remember. When liquid composition is given and pressure is given and we are finding T and Y1, what are we doing? नहीं याद है किसी को? When liquid composition is given and we find vapor composition, what is it? What kind of calculation is that? Bubble point calculations, right? Liquid composition दिया है, उसका vapor composition निकालने का है, temperature निकालने का है, right? So it is bubble point calculation. And pressure and temperature and X1 is given. Bubble point temperature calculation, sorry. Bubble point and temperature calculation. And temperature and liquid composition is giving, and we have to find pressure and Y1. We are finding again bubble point pressure calculation. Y1 is bubble point composition and pressure for that temperature. Similarly, if you look at D part, pressure is given, Y1 is given, we are finding X1. What is this thing? Now, can you tell me? Vapor composition is given, you are finding liquid composition is equilibrium with the vapor. What is that? पहला पार्ट समझ में आया क्या? पार्ट ए एंड बी, बी एंड सी, सॉरी, बी एंड सी समझ में आया? So when liquid composition is given, you are finding vapor composition, that is bubble point. And vapor composition is given, and we are finding liquid composition. What is that? Dew point. Huh? Dew point है ना ये? This is bubble point. B and C is bubble point. D and E is dew point. Vapor is given. We have to find liquid composition. In one case it is temperature, one case it is pressure. So we have done bubble point calculation. We have done dew point calculation, right? Dew point का नहीं किया अभी दूसरा, second वाला. So we have to do this now. Find P and X1 at 327 Kelvin and Y1. ये किया था हमने E part. Hello. No, sir. E part नहीं किया ना? So let us do that E part. Again, it's similar to C part, and the only thing is here Y1 is given and we have to find out X1. कैसे करेंगे? How do you do this? सर टी का वैल्यू दिया है, P1S और P2S निकाल सकते। क्या निकालना है? टेम्परेचर दिया है, हाँ, P1S और P2S निकाल सकते हैं। तो निकाला हुआ है ना हमने, 327 पहले निकाला, राइट? एट ए पार्ट में निकाला हमने, ए पार्ट और सी पार्ट में वही किया हमने, 327 टेम्परेचर दिया था, राइट? तो P1S P2S इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड फॉर अस, राइट? बराबर ना? That you already know. We have already done that calculation. We don't have to repeat it. So now what is सर next? वो y1 का इक्वेशन है, उसमें p का इक्वेशन डाल के रीअरेंज किया तो x1 मिल जाता है ना? So करो फिर, let's do it. Do it then. Calculate x1 and p. सर पहले P कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ तो कैसे करेंगे वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं. How will you do it?
That's exactly what I'm asking you. How will you do it? सर लास्ट पार्ट में जो फॉर्मूला डिराइव किया था उससे पी का फॉर्मूला जो डिराइव किया था वही सर। कौन सा फॉर्मूला था? कौन सा फॉर्मूला? ये है ना, y is given, p1s is known, p2s is known, right? So we can use this formula. p1s, p2s is known, y1 is known. We can calculate p. ठीक है? So we can use this formula. To use this formula and calculate p, and then once you know p, you can find out x1. करो फटाफट. Let's do it. Find out what is the value of p and x1. It should not take too much time. सर P is equal to 15.09 kilopascal. Okay, so p आ गया तो find out what is x value of x now, x1. सर x1 0.2355। Okay, good. किसने किया ये? क्या नाम है? शुभम। शुभम. ओके, और किसी का हो गया? बुक में आंसर देख के नहीं बताने का है, एक्चुअली करने का है. देन यू विल अंडरस्टैंड. किया है सर। मैं सबको बोल रहा हूँ कि बुक का सॉल्व एग्जाम्पल लेकर रेफर द बुक एंड गिव मी द आंसर, बट दैट इज नॉट द वे टू डू इट. 0.2354. ओके, बुक में कुछ अलग तरीके से किया है उसने. एक्शन पहले कैलकुलेट के बाद में पी किया है. एनीवे इज करेक्ट. आंसर शुड नॉट चेंज. बुक में ये इक्वेशन यूज किया है टू कैलकुलेट x1 फर्स्ट एंड देन p. इट डजंट मैटर ये क्या ये क्या, आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज. और किसका हो गया? सर x1 is equal to 0.2354 same. ठीक है. दीक्षिता हो गया क्या? सर 0.235 प्रेशर आ गया 0.09. यस सर. और कौन है? सिद्धि हुआ क्या? यस सर हो गया. ओके, तो बोलो ना हो गया करके. हाँ बोला नो, हुआ कि नहीं हुआ? ओके, सो हो गया. तो अभी नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज, लेट्स सी व्हिच इज नेक्स्ट पार्ट.
next part is F part, the fraction of the system that is liquid and the composition of the liquid and vapor in equilibrium at 327 Kelvin at 65 kilopascal when the overall composition of the system is 70 mole percent acetone. Okay. So now we have to find out fraction of system which is liquid. Okay. Temperature is given 327 Kelvin, pressure is given 65 kilopascal. And overall composition is 70 mole percent acetone. अब इसमें 70 मोल परसेंट एसीटोन बोला तो व्हाट इज इट, x1 है कि x2 है? What is it? What is 1 and what is 2? Nobody knows what is 1 and what is 2, is it? आंसर नहीं, बस दिखा के Sir, रखा है. acetone is a more volatile one. मोर वोलेटाइल, लेकिन कौन सा कंपोनेंट है, एसीटोन है कि एसीटोनाइट्राइल है? X1. एसीटोन दिया है ना, यहाँ पर दिखा ही रहा हूँ मैं आपको. वेपर प्रेशर्स ऑफ एसीटोन ब्रैकेट में 1, एसीटोनाइट्राइल ब्रैकेट में 2 दिया है ना, राइट? It's already mentioned in the problem statement. Acetone is 1. That means x1 दिया है हमारे को. Overall composition दिया. Overall composition is 71. That means what? This is that portion of the vapor which is in Sir, XF. if you look at this diagram, what I had mentioned before was that this portion of the curve, this part is the vapor, right? This part which is between these two curves is liquid and vapor, right? So what it means is that he has given a point which is somewhere in between these two curves. That means if we separate it out, we'll get a liquid phase and we'll get a vapor phase. दोनों आएगा उसमें. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया क्या? No, sir. Right, so it is somewhere in between these two curves. If you take any curve, ये लिया, say this is pxy diagram, right? If we take pxy diagram also, same thing. कहाँ गया? Yeah. So if we take this one also, it is between these two. Somewhere in between these two. Overall composition दिया, that means vapor plus liquid composition is given as 70% acetone. Now we have to find out what is the composition of the liquid and what is the composition of the vapor, right? Or how much is the fraction, right? So essentially material balance करने का हमारे को, right? कि कितना फ्रैक्शन लिक्विड है, कितना फ्रैक्शन वेपर है. यहाँ पर बताया था कैसे निकालेंगे लेवर आर्म प्रिंसिपल से, राइट?
If you draw a tie line, then from lever arm principle you can find out what is the quantity of liquid and what is the quantity of vapor. ये बताया था मैंने आपके, amount of liquid to amount of vapor. Now this is what we want to calculate from overall composition. Overall composition is 70% of acetone and 30% acetonitrile. So that is overall composition. Now this is being separated into two phases. One is liquid, one is vapor, right? And composition क्या है उसका, liquid का और vapor का दिया है क्या? Is the composition liquid and vapor given? Sir. दिया है liquid composition, vapor composition क्या है? What is the liquid composition? What is the vapor composition at 327 Kelvin and 65 kilopascal? वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ? कैलकुलेट करना पड़ेगा वो। अरे कैलकुलेट क्यों करना पड़ेगा भैया, इतने कैलकुलेशन किया उसमें कहीं नहीं आंसर। x1 दिया है, x1 कहाँ दिया है? सर पार्ट 1 यस, पार्ट 1 में हमने किया है, फाइंड x1 एंड y1 एट 327 केल्विन एंड 65 किलोपास्कल, आंसर वहीं पर दिया है. दिस पार्ट ए वाज फाइंड आउट x1 एंड y1 एट 327 केल्विन एंड 65 किलोपास्कल, राइट? अभी टेम्परेचर भी यही है 327 किलोपास्कल, प्रेशर वही है, सॉरी 327 केल्विन एंड प्रेशर भी सेम है 65 किलोपास्कल. सो x1 y1 वी ऑलरेडी नो फ्रॉम पार्ट ए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1? दो फेज का 0.5608 and 0.7344, right? So this, when you take that mixture in between the two curves and separate it out, we'll get a liquid phase and we get a vapor phase. Liquid phase will have a composition of x1 0.5608 and vapor phase will have 0.7344 acetone, right? तो composition पता है हमारे को liquid का और vapor का, और overall composition पता है अपने को 0.7, right? So what we need to find is fraction of the mixture which is liquid and how much is vapor, right? तो material balance कर सकते हैं हम इस पीसी एप्लीकेशन, और कुछ नहीं है, सिंपल पीसी है ये, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस करने का अपने को. ओवरऑल मिक्सचर इज सेपरेटेड इनटू लिक्विड एंड वेपर. So suppose the fraction of liquid is F or something M doesn't matter. You take some unknown number. Fraction is suppose F. तो कर सकते हैं material balance हम. How much is liquid composition into that Yes, fraction? sir. करो हम. समझ में आ रहा है? The overall composition is 0.7. That is a mixture of liquid and vapor. Liquid has 0.5608 acetone and vapor has 0.7344 acetone. You need to find out how much is liquid percentage or fraction and how much is vapor. Overall material balance करके निकाल सकते हैं आप. It's not overall material, it's component material balance, sorry, acetone material balance. So we'll do both acetone material balance. Overall में कितना है acetone is equal to liquid में कितना है acetone plus vapor में कितना है acetone. समझ में आया लोगों को? कितने लोग को नहीं समझ में आया? Sir, me, Vaibhav. Sir, there will be 3 variables. There are not three, there are only one variable. There is only one variable in one equation. So if I say acetone material balance, can you see this? You cannot see this, is it? क्या हो गया?
Can you see this? Cannot see it, is it? क्या हो गया? Broadcast क्यों नहीं हो रहा है? Why is it not working? सर दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ सर. मेरे को नहीं दिख रहा है. That's why I'm wondering क्यों नहीं दिख रहा है मेरे को. Because it is on iPad and I दिख रहा है. normally see it on this one. अभी क्यों नहीं दिख रहा है मेरे को ही समझ नहीं आ रहा. ठीक है, दिख रहा है आपको ना? So what we have to do is we have to take acetone material balance. दिख रहा है ये acetone material balance लिखा मैंने. Yes, sir. Sir. Yes, sir. So acetone in mixture is equal to acetone in liquid phase plus acetone in vapor phase. दिख रहा है ये? What I have written? Yes, sir. So acetone in mixture कितना है? 0.7 and suppose इसे 1 mole लिया हमने of the mixture, right? 1 mole या 100 ml, doesn't matter. We can take whatever we want, right? बराबर. So this is acetone in the mixture, which is a mixture of liquid and vapor. Overall composition दिया हमारे 0.7 acetone. Acetone in liquid कितना होगा? Suppose liquid is fraction F. 1 का जो है point F is liquid. तो कितना हो जाएगा acetone in liquid? F into 0.560. 0.5. ओके, अभी आ रहा है. मेरा नेटवर्क कैसे होगा? प्लस वेपर कितना हो जाएगा? दिस इज 1. सॉरी. Okay, if this is 1 and this is F, right? So if F feed is a 1 and liquid is F, तो वेपर कितना हो जाएगा? 1 ओवरऑल minus. मटेरियल से 1 minus 1 माइनस F. ओवरऑल मटेरियल बैलेंस से 1 माइनस F इज वेपर, राइट? और वेपर कंपोजिशन क्या है? 0.734. राइट? ठीक है, समझ में आया ये लोगों को? Yes, sir. So you can find out what is the value of F. Yes, sir. That is the fraction of liquid in that mixture. हमने 1 इसलिए लिया क्योंकि फ्रैक्शन चाहिए. अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 ले सकते थे, फिर 100 माइनस F हो जाता था. Doesn't matter, whatever we take, we can interpret it accordingly. ठीक है, हो गया? Yes, sir. What is the value of F now? 0.198156. F is 991. 0.19. So 0.98156. Okay, 19 na 198. So that Yes, means sir. 19.8% is liquid and 70 or 80.2% is vapor, right? So that means whatever composition was given, it is in the liquid plus vapor region. वहाँ पर थोड़ा liquid होगा, थोड़ा vapor होगा, and we'll get two phases. One is liquid with 0.5608 acetone, one is vapor with 0.7344 acetone. So these two are in equilibrium and we get two phases. ठीक है, समझ में आया ये? किसी को डाउट है, क्वेश्चन है? देवेंद्र? सर एफ की वैल्यू का नहीं समझ आया. क्या हाँ? बोला आपने? क्या? एफ के वैल्यू के बाद क्या बोला वो नहीं समझा.
F के वैल्यू आ गए, राइट? F is fraction of that mixture which is liquid, right? That's what we have said. उसको अगर मिक्सचर लिया, इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर, उसको हमने सेपरेट किया तो विल गेट अ लिक्विड फेज एंड विल गेट अ वेपर फेज। तो अगर हमने 1 मोल लिया मिक्सचर का तो कितना मोल होगा लिक्विड का, वो निकाला हमने, राइट? It is 19%, 19.8% is liquid phase and 80.2% is vapor phase. ठीक है, एनी डाउट्स? सर उस एफ में दोनों हो गए ना, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। हाँ, कंपोनेंट 2 है ना, जैसे 19.8% जो लिक्विड फेज है उसमें एसीटोन इज 0.5608, तो एसीटोनाइट्रल कितना होगा? वन माइनस 0.5608। माइनस 0.5608। तो उसमें जो लिक्विड फेज है उसमें एसीटोन भी है, एसीटोनाइट्रल भी है, लेकिन एसीटोन 0.56 है और एसीटोनाइट्रल 0.444 करीब आएगा, राइट? अगर वेपर लिया हमने, वेपर में एसीटोन इज 0.73, दैट मीन्स एसीटोन इज मोर इन द वेपर फेज and less in the liquid phase because it is more volatile. The vapor will have more of the more volatile component, जिसका boiling point कम है वो वेपर में ज़्यादा रहेगा, जिसका boiling point कम है वो लिक्विड में ज़्यादा रहेगा। ये बताया था मैंने आपको डिस्टिलेशन के प्रिंसिपल में, राइट? फीड इज 0.7, फीड में 0.7 है एसीटोन, लेकिन वेपर में 0.7344 है। दैट मीन्स फीड हमने लिया 70% एसीटोन का, उसको हमने डिस्टिलेशन में इक्विलिब्रियम में किया, we'll get a vapor which has more than 70% acetone and liquid which has less than 70% acetone. ऐसे separation ऐसे होता है. That's how we get enrichment. It's called enrichment of the vapor. Vapor is richer in the lower boiling component, and that's why it's called enrichment of the vapor. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. ठीक है, so material balance is never going to leave you as long as you practice chemical engineering. थर्मो भी material balance आ रहा है, कहीं भी आएगा, so no, don't forget material balance ever. ठीक है, so let's move on to the next problem now. Okay, so ये हो गया, पार्ट डी हो गया, ई हो गया, सब हो गया इसका, राइट? एफ भी हो गया इसका। अभी ये क्वेश्चन करना है क्या, प्लॉट टी वर्सेस एक्स वाई, या ओके। So let us do this example 8.10 because एग्जाम में आता है बहुत बार टी एक्स वाई डायग्राम, because this question is plot t versus x y, x and y, right? And y and x, y against x is equilibrium diagram. So pxy आता है, txy आता है, so we'll do txy. You can think about pxy बाद में, ठीक है? Let us do this example. Mixtures of n heptane, heptane is lower boiling, A, instead of 1 is given A here, and n octane, octane का boiling point ज़्यादा है, B, are expected to behave ideally. The total pressure over the system is 101.3 kilopascal. Using vapor pressure data given below, construct the boiling point diagram and the equilibrium diagram and deduce an equation for equilibrium diagram using वो ठीक है, C part नहीं करेंगे हम, ज़्यादा सोचेंगे नहीं. Let's do A and B part. So vapor pressure is given. Instead of giving equation, entire equation, they are given vapor pressure at different temperatures in this range 371 से 398 पर, और ये वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन है और ये वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन है. So looking at the vapor pressure, can you tell me what is the boiling point of heptane, what is the boiling point of octane? Who can tell me?
सर एन हेप्टेन का 371.4 केल्विन। एन हेप्टेन का, ओके, यस। और ऑक्टेन का? वो 398 398.6 केल्विन। गुड। कौन बोला है? देवेंद्र? हाँ सर। ओके, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज लाइक दैट? आंसर करेक्ट है, बट कैन यू एक्सप्लेन दैट? सर क्योंकि तब कॉन्सेंट्रेशन फुल है ना, सैचुरेशन 101.3 पे। यस, दैट एग्जैक्टली। प्रेशर। So at boiling point, vapor pressure is equal to total pressure. ये आपको पता होना चाहिए. When we say that water का boiling point 100 degree centigrade है at 101.3 kilopascal pressure, that means at that pressure, at that temperature, the vapor pressure of water is 101.3. ये फंडा आपको पता रहना चाहिए. That is how we find out what is the boiling point. Or that is the meaning of boiling point rather. Let us put it this way. So when you look at this one, PAS का total pressure is 101.3. total pressure जो दिया है system का 101.3 दिया, right? Vapor pressure भी 101.3 है at 371.4 Kelvin. That means at this temperature or at this pressure 101.3, the boiling point of heptane is 371.4. Similarly, if I look at PBS, vapor pressure of octane, 101.3 kilopascal vapor pressure is at 398.6. That means that is the boiling point of octane. ये आपको रीड करते आना चाहिए. Any doubts, questions? Are you able to see this? Example 10. Yes, sir. Yes. So now you know what is the boiling point of heptane and what is the boiling point of octane, and we need to draw boiling point diagram. Boiling point diagram क्या रहता है? What is boiling point diagram? TXY curve. TXY, right? Boiling point is TXY, right? So TXY में दो टेम्परेचर रहता है एंड में at x equal to 0 and x equal to 1, and those are two boiling points of the two components. याद है आपको? So if you look at Yes, sir. TXY diagram, let me show you that TXY diagram. ये TXY diagram है, right? If I look at TXY diagram, this is the boiling point of component 1, more volatile component T1, and this is the boiling point of less volatile component T2. So this is N-heptane boiling point T1, and this is N-octane boiling point T2. And you draw this TXY diagram. TY कर्व ऊपर आएगा, TX कर्व नीचे आएगा. समझ में आ रही है बात? यस सर। Okay. So now we have to do that. Now let's see. Okay, so temperature दिया है, vapor pressure दिया है, right? So we have to find out x and y for given temperature. ये temperature we have to do it at this, ये जो temperature पे vapor pressure है इसी का calculation करना, because you cannot do interpolation, right? तो यही 3 और 3 6 पॉइंट पर हमारे को x और y कैलकुलेट करने का है, राइट? कैसे करेंगे? अभी हमने कैलकुलेशन किया एग्जांपल पहले, राइट? वी हैव डन वन एग्जांपल व्हिच इन्वॉल्व्स ऑल दीस थिंग्स. कैसे करेंगे बताओ? प्रीवियस एग्जांपल के बेसिस पर, हु कैन टेल मी? सर x से कैलकुलेट करेंगे पहले. हाँ, XA. x से कैसे करेंगे कैलकुलेट? हाउ विल यू कैलकुलेट x से? P is equal to P2S Sir, plus P2S. P1S minus P2S into X1. करेक्ट. इक्वेशन है अपने पास, वी नो दैट इक्वेशन P is equal to P2S प्लस ब्रैकेट में P1S minus P2S into X1, राइट? X1 is XA here. So हमारे पास P2S है,
और PBS है, PAS है, दोनों है, राइट? एंड we know pressure also. Pressure is given 101.3, so we can calculate x1 for each of these points, right? Once you know x1 from Raoult's law, we can calculate y1. ठीक है, करो. So for each of these points, calculate x1 first. टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है हमारे को, PAS दिया, PBS दिया. You can calculate x1 for each of these points, and then once you know x1, you can calculate y1 by Raoult's law. करो फिर, फटाफट करो, and let me know what are the values. समझ में आया लोगों को? Is it understood? यस सर. कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन है तो पूछो, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है ड्रॉ TXY डायग्राम एंड PXY डायग्राम. TXY का एग्जांपल है ये, PXY का सिमिलर रहेगा, कुछ नहीं है. PXY भी सिमिलर ही रहेगा. फर्स्ट पॉइंट का कितना x1 वैल्यू और y1 वैल्यू? हुआ क्या x1 x से xb? हेलो, कर रहे सर.
क्या बोल रहे हैं? Hello, can you hear me? Yes, sir. इसमें नेटवर्क चला गया था. ओके, सो आया क्या फर्स्ट पॉइंट का आंसर? x1, xa and y. Yes, sir. What is the value? What is the value of xa and y for the first point? 1. X is equal to 1 and y is equal to also. Yes, क्योंकि प्योर है, प्योर हेप्टेन है तो 1 ही आना चाहिए. ओके, ठीक है. सो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सबका करो कैलकुलेशन. डू कैलकुलेशन फॉर ऑल दीज टेम्परेचर्स. 6 पॉइंट है, 6 का कैलकुलेट करो एक्स एंड वाई. हो गया. सेकंड पॉइंट का क्या वैल्यूज? नॉट टेक टू मच टाइम. Sir, x1 point क्या वैल्यू सेकंड पॉइंट का? 0.656 x1 and y1 is 0.8109. ओके, ठीक है. थर्ड पॉइंट. x1 is equal to 0.4874 and y1 is equal to 0.6736. ओके, एंड फोर्थ पॉइंट. 0.31103 and y is 0.4913. ओके, फिफ्थ वन. X is 0.15756 and y is 0.2798. ओके, एंड लास्ट वन. 0 0. 0. 0 गुड. सबका हो गया कैलकुलेशन? कितने लोग का हो गया? रेज द हैंड. Good. So you all know how to calculate these values now, right? Now all you have to do is plot temperature versus x, y, right? वो डायग्राम बताया था मैंने आपको. y axis पे टेम्परेचर रहेगा,
एक्स एक्सिस पे एक्स एंड वाई रहेगा, सो ये टू कर्व्स टी वाई कर्व एंड टी एक्स कर्व, उसको ज्वाइन करने का। ठीक है, किसी को डाउट है कुछ इसके ऊपर? Anybody has any doubts how to draw the TXY diagram? No, sir. Okay, so that is first part, which is TXY diagram, right? Second part is equilibrium. Equilibrium diagram क्या रहेगा? What is equilibrium diagram? सर वो टाई लाइन निकल के सर Equilibrium diagram is nothing but y-x diagram. आपने y और x दोनों कैलकुलेट किया, राइट? So all you do is draw this. This is your TX diagram. Temperature on the y-axis and x and y on the x-axis, right? So you'll get a TY curve, which is temperature versus y, and TX curve is temperature versus x. तो ऐसे दो कर्व आएगा आपका, यहाँ पर ज्वाइन होगा T1 and T2 पे. And where is that other one? किधर गायब हो गया? So this is equilibrium diagram. Y एक्सिस पर y रहेगा, x एक्सिस पर x रहेगा. So कैलकुलेट किया आपने x और y. On y axis draw the y, put y 0 to 1 is always from 0 to 1 and x is also 0 to, आपको एक कर्व आएगा ऐसा, ऊपर आएगा diagonal नीचे रहेगा, right? You will get a curve like this, y equal constant pressure पर. ठीक है, समझ में आया डायग्राम कैसे ड्रॉ करने का? Is it understood? Yes, sir. Okay. Respond नहीं किया तो मेरे को समझ में नहीं आता है. Are you able to hear me or not? So the next part is, जनरली कोई नहीं पूछता, what we'll do सर it so that you understand वो our third way or another way of doing the same problem. हेलो सर you are not audible. Can you hear me now? Yes, sir. Yeah, Yes, network sir. का बहुत प्रॉब्लम. ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या था, किसका था? सर वो बॉइलिंग पॉइंट कर्व से भी निकाल सकते हैं ना, तो चलेगा या क्या? बट वही है ना, वही ड्रॉ कर रहे हैं ना, आपने जो एक्स वाई कैलकुलेट किया वही ड्रॉ कर रहे हैं ना हम. यू आर डूइंग बॉइलिंग पॉइंट कर्व में क्या है, टेम्परेचर है वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर है एक्स एंड वाई, राइट? यू आर ड्रॉइंग टेम्परेचर Yes. वर्सेस वाई, एक कर्व आएगा ऊपर वाला टी वाई कर्व, और टेम्परेचर वर्सेस एक्सिस लोअर वाला कर्व टी एक्स कर्व, राइट? बराबर. Now xy curve we don't need temperature, we need only y and x. So वही है, same values y and x you're plotting on the y x curve, xy curve.
समझ में आ रही है बात? यस ओके, ठीक है. So सर, the आपने last वो part, टाई लाइन tie line is, it was just just a way to explain it, but once you have the values of x and y, you don't need to do tie line, right? तो x का जो आपने कैलकुलेट किया है, those are tie lines. जैसे आपने कैलकुलेट किया कि 0.656 वैल्यू ऑफ x है, राइट, एंड y है 0.811, राइट. कैलकुलेट किया नहीं आपने? यस सर Those, that is the two ends of the tie line only. समझ रहे हैं? ये जो आपने ओके सर कैलकुलेट किया x y, they are actually two ends of the tie line. समझ रहे बात? Let me show you. यस सर What you have done calculation is essentially tie line. ये जो ये tie line ही है, right? ये वेपर कंपोजिशन है, ये लिक्विड कंपोजिशन है. ये किया ना हमने कैलकुलेट. P is nothing but liquid composition, Tx curve, and Q is nothing but vapor composition, Ty curve. और ये जो पॉइंट जो लाइन ड्रॉ करते हैं, कनेक्ट करते हैं P और Q को, इट इज कॉल्ड टाई लाइन. समझ में आई बात? यस सर Okay, that's what we have done actually. We have actually calculated the tie line and two ends of the tie line. Okay, so let's complete this part, जो last part था, which is, सर ये ग्राफ ड्रॉ करना है. हाँ, ग्राफ ड्रॉ करने का है. You draw the graph. I am not going to give you time here. Do it at home. Okay, that is your homework. Actually यहाँ पर ग्राफ बट यू हैव टू प्लॉट. और दूसरे y एक्सिस पे y रहेगा और x एक्सिस x रहेगा. Okay, reduce an equation theorem diagram using arithmetic average. ये अल्फा रहना चाहिए, not nobody remember. Don't remember anything. Just for volatility. Can you hear me now? Yes, sir. Hello. Yes, Network issue. Sorry for that.
So P2 y5 both having problems. So alpha is defined as P1s upon P2s. Can you see this? Yes. प्लीज जो घर पे हैं म्यूट करके रखो क्योंकि आपका बैकग्राउंड का नॉइज नहीं चाहिए मेरे को. What is alpha? P1s upon P2s, right? That's what we defined alpha, relative volatility of component 1 compared to component 2. Right? And we have derived this equations. y1 कैसे निकालने का? y1 is x1 into p1s upon p. ठीक है, याद आ रहा है किसी को? Hello. Yes, sir. So what we have to do is we have to use this equation, calculate alpha for each of those values, temperatures 371.4 up to 398.6 के लिए सबके लिए अल्फा कैलकुलेट करने का है. Right? So we'll get 6 values of alpha and then we have taken average of that all the values of alpha. जितना भी अल्फा वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे हम उस सब के लिए 6 के लिए उसका एवरेज वैल्यू लेने का and then use it in this equation which we had derived. Then use it in this equation 8.55. Once you know the alpha value, average alpha value, you can select any value of x1 between 0 to 1 and find out y1. Is this understood now? समझ में आ रहा है? Hello. हाँ सर. I'll leave this to you as an exercise. घर पे कैलकुलेट करो अल्फा फॉर ईच ऑफ दोस 6 पॉइंट्स. P1s and P2s दिया हुआ है. अल्फा इज P1s upon P2s. कैलकुलेट करके you take an average of all the 6 points and you put in this alpha here, average alpha here. You get an equation of y1 versus x1. Then you can select x1 between 0 to 1, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, whatever, and calculate y1. And that will give you another yx curve. yx curve एक हमने पहले कैलकुलेट किया वेपर प्रेशर से P1s और P2s and this from relative volatility. ठीक है? So you can do it at home. We will not do it in the class. Any questions, doubts? Can you hear me? Yes, sir. तो रिस्पांस देना चाहिए ना, अदरवाइज क्या होता है मेरे को लगता है नेटवर्क इश्यू है क्या, इफ यू नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल. ठीक है, तो ये एक होमवर्क रहेगा आपके लिए, दोनों ग्राफ ड्रा करने का. TXY कर्व कैलकुलेट किया हुआ वैल्यूज, फिर देन यू फाइंड आउट अल्फा फॉर ईच ऑफ दोस पॉइंट्स, टेक एन एवरेज वैल्यू ऑफ अल्फा, पुट इन द इक्वेशन 8.55 and then calculate y1 for different values of x1 and draw again a xy curve. That will be homework. You can do it at home because ये फर्स्ट पार्ट तो आ सकता है एग्जाम में, ये पता नहीं. ठीक है? Okay, sir. If you have any questions you can ask now, otherwise I'll stop the meeting.